Hello everyone, hi Bacho, how are you guys? Welcome to the session. So we are going to do episode number 29 of daily DLR live series for students who are preparing for CAT and OMETS exam. This is the set where I'll be taking a data case-led puzzle based on the concept of average, guys, right? It's similar to one of the set of the previous year CAT paper. It's not an actual CAT paper set, but inspired, the concept is inspired from the previous year CAT paper, guys, right? Have you tried solving the set? कितने बच्चों से हो गया ये set बच्चों? How many of you have done it? Good evening, guys. Good evening. चलो, let's have a discussion on the set, guys. Right? Let's have a discussion on the set. देखो, main points क्या हैं? ये सेट वो बच्चा इजीली कर लेगा जिस बच्चे के एवरेज के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है बच्चों. इफ यू आर गुड विद योर एवरेज कॉन्सेप्ट देन यू कैन इजीली डू द सेट, राइट? एवरेज के बेसिक्स ही चाहिए, राइट? और कुछ नहीं. सी दिस, let's first understand the instruction of the set. Tokri Bordalwala, a renowned businessman, bought 4 cars from 4 different companies: Maruti, Hyundai, Nissan, and Chevrolet. For his 4 daughters, the 4 cars were, see that these are the name of the companies from which he's purchasing the car, and the car names are Zeds, City, Swift, and Micra, each from exactly one of the given companies. So these 4 cars belongs to these 4 companies, right? Okay, but we do not know that City belongs to which of the company, Swift belongs to which of the company, Micra belongs to which of the company. We do not know that, right? The salesperson guaranteed a mileage in miles per liter of 20, 24, 32, and 40 given for these cars, Zaz, City, Swift, and Micra, respectively. Okay, so that means it's given to you that Zaz car would be giving a mileage of 20 km per hour. City will be giving a mileage of 24 km per hour. Swift will be giving a mileage of 32 km per hour. And Micra will be giving a mileage of 40 km per hour, right? After 1 month, 2 of these cars showed a mileage which is less than what the salesperson had guaranteed. So these are the mileage which have been guaranteed, but out of these 4 cars, 2 cars are not performing as per the guaranteed mileage. In fact, they are giving the lesser mileage as compared to what has been guaranteed. The other and the one of these 2 cars, the two cars which are not performing as per the guaranteed mileage is one of these 2 cars was a product of either Maruti or Hyundai. So one of the car which is not performing as per the guaranteed mileage either belongs to Maruti or Hyundai, and for this particular company the mileage was half of what was guaranteed. For example, if Jazz belongs to Maruti or Hyundai and it is not performing as per the guaranteed mileage, then this performance will be reduced to half of it. That means instead of giving a 20 km per hour, 20 km per liter mileage, it will be running at 10 km per liter, right? So the company, the car that belongs to any of these 2 companies, one of the car that belongs to any of these 2 companies giving half of the mileage which was guaranteed, right? By this, the other one was a product of either Nissan or Chevrolet. The another car which belongs to either Nissan or Chevrolet, for which the mileage was 3/4 of what was guaranteed. For example, if I say that City belongs to either Nissan or Chevrolet and giving the mileage lesser than what was guaranteed, so the new mileage of Chevrolet would be how much, guys? New mileage of Chevrolet would be how much? 3/4 of 24. That means the new mileage of this City would be 18 km per liter, guys, right? But we do not know that this does belong to this company or not. It says that any car that belongs to this particular company and not performing as per the guaranteed mileage will be giving 3/4 of the average. Is this part clear to everyone? ये instructions आप सबको समझ में आ गए थे? हाँ? इतना पार्ट समझ में आया था? This was the main part in this set, guys, right? If you could have managed solving this much information, right? इतना पार्ट अगर आपको समझ में आ गया, then you could have solved the set easily, guys, right? Is it clear? ठीक है बच्चों.
Now that's it. For the remaining two cars, the mileage was the same as initially guaranteed. But दो गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें से एक गाड़ी ने हाफ का माइलेज दिया, दूसरे ने 3/4 का माइलेज दिया, राइट? एंड बाकी दोनों गाड़ियां अपनी गारंटेड माइलेज के हिसाब से माइलेज दे रही हैं. Now this is the first question, guys. What is your answer, guys? Come on, write down your answer in the comment section. आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर बताओ. Tell me the answer that you have got. First का A, B, okay. B, okay. Most of you are giving me the B as an answer, okay. All right, let's check it. Let's check it, guys, right? ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे टाइप किया हुआ है. Let's have a discussion on it. It says Tokri Bodalwala got maximum possible average mileage of all the 4 cars. Okay. See guys, the 4 cars are Zs, City, and Swift and Micra, right? Swift and Micra, right? If each of these car is performing as per their guaranteed mileage, then the mileage of these 4 cars would be 20, 24, 32, and 40. 20, 24, 32, and 40. Okay, this is supposed to perform at a speed of at a mileage of 20 kilometer per liter, right? 20, 24 kilometer per liter, 32 kilometer per liter, and it would be 40 kilometer per liter, right? These are the 4 guaranteed mileage. Yes or no? यही है ना? ठीक है. Guys, what is the current average? At this moment, what is the average we have? इस टाइम पे एवरेज कितनी है? 20 plus 24 plus 32 plus 40 का एवरेज कितना बनेगा? What is the total? 60, 84, 84, 86, 96, 106, 116, right? At this moment, average is 29 kilometer per liter, right? ये चारों का एवरेज 29 kilometer per liter है. Yes or no? Is this point clear to you? Right? At this moment, the average is going to be 29 kilometer per liter, right? ये जो एवरेज है बच्चों, ये 29 kilometer per liter का है. Now, you see that here, I want the average to be maximum possible. Now, I know that 2 of these cars are not giving the guaranteed mileage. So, if I say that Zaz is the car which is giving half of the mileage, then the new mileage of this would be 10 kilometer per liter. This mileage will be 12, this mileage will be 16, this mileage will be 20. And one of the car which gives 3/4 of the mileage will either be will be giving the mileage of, if this car is yes, then the mileage from this car would be how much? 15 kilometer per liter, right? 24, 6, 18 kilometer per liter, right? 32, 8, 24 kilometer per liter. And then this will give you 30 kilometer per liter, right? So one of the actual mileage belongs to this row, one of the mileage belongs to this row, right? 2 cars we are supposed to pick, right? This car belongs to Maruti, or this car belongs to Maruti or Hyundai, right? If any car that gives half of the mileage belongs to Maruti or Hyundai, and this car belongs to the Nissan or Chevrolet. Now guys, you see that here, if I want to keep the average as maximum as possible, I will pick those 2 numbers from these 2 rows which will reduce my average with minimum possible value. Yes or no? Average को कम से कम अगर मुझे reduce करना है बच्चों, if I want the reduction in the average to be as low as possible, if I want the reduction in the average to be as low as possible, then I will be picking a number, which reduce the total value by as minimum as possible. Now you can see that here, कि इन चारों averages में से जो सबसे maximum average वाले हैं वो है 32 and 40. Will you be reducing the average of these 2 cars? क्या आप इन 2 गाड़ियों की average को reduce करोगे? फिर आपकी average ज्यादा नंबर से reduce हो जाएगी. Why? बिकॉज ये सबसे बड़ी वैल्यूज है, मेरे को एवरेज को मैक्सिमाइज करना है. 4 वैल्यूज मेरे को पिक करना है, 4 वैल्यूज वो पिक करनी है जिसमें से एवरेज मैक्सिमम होना चाहिए. एवरेज मैक्सिमाइज करने के लिए टोटल सबसे ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए. टोटल को मैक्सिमाइज करने के लिए 2 हाईएस्ट वैल्यू को आप चेंज नहीं करोगे. यस और नो? डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? यू विल नॉट चेंज द वैल्यूज विच आर हाईएस्ट पॉसिबल.
Do you agree with this point? Anybody having any doubt in this, do let me know. है ना, बिकॉज मुझे एवरेज को मैक्सिमम पॉसिबल रखना है एंड आई नो कि एवरेज 29, ये गारंटीड वाली माइलेज अगर हम रखते हैं तो एवरेज 29 होना चाहिए, बट इसमें से दो एवरेजेस अपने को, दो वैल्यूज अपने को रिड्यूस करनी है, तो जिसकी वजह से एवरेज रिड्यूस होगा, बट वो रिड्यूस एवरेज को मैक्सिमम पॉसिबल रखने के लिए आई विल बी कीपिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज एज इट इज, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज को आपको एज इट इज टोटल में लेना पड़ेगा, जिसकी वजह नहीं तो आपका एवरेज रिड्यूस हो जाएगा, राइट, ज्यादा वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगा। मुझे एवरेज को कम से कम रिड्यूस करना है, व्हाई, बिकॉज इट सेज कि एवरेज मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए। नाउ टेल मी गाइस, नाउ टेल मी, I want to pick one value out of these two and one value out of these two, तो कौन सी वैल्यूज पिक करनी चाहिए? If I say that, if I pick these two values, right, कि if I assume कि Jazz is giving you half of the mileage and City is giving you 3/4 of the mileage, तो tell me guys, मेरा total में decrement कितने का आएगा? The total value will get reduced by 10 का decrement यहाँ पे आ रहा है और 6 का decrement यहाँ पे आ रहा है, right? So taking these two values will reduce my total by 16, right? And if I pick these two values, अगर मैं बाकी की दोनों values लेता हूं तो एवरेज में कितने का डिक्रीमेंट आएगा? You see that if I pick these value, right? Right? If I say कि इसने half mileage दिया और इसने 3/4 का mileage दिया, in this case the total get reduced by 12 here and total get reduced by 5 here. तो 12 plus 5 तो टोटल डिक्रीमेंट 17 का आएगा। टेल मी गाइस, मुझे 16 के डिक्रीमेंट वाली वैल्यूज पिक करनी चाहिए और शुड आई बी पिकिंग द वैल्यूज दैट इज गिविंग मी अ टोटल डिक्रीमेंट ऑफ 17? कौन सा वैल्यू पिक करना चाहिए? एवरेज को कम से कम रिड्यूस करना है सो दैट द ओवरऑल एवरेज शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल, सो आई शुड बी पिकिंग द वैल्यूज दैट रिड्यूस माय एवरेज बाय अ लेसर नंबर। तो आई शुड बी अज्यूमिंग कि जेज जो कार है वो हाफ माइलेज देगी और सिटी जो कार है वो 3/4 का माइलेज देगी। तो जेज हाफ, दैट मींस ये रेड वाला केस आपको लेना पड़ेगा, ब्लू वाला केस आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यस और नो? जिन वैल्यूज के ऊपर मैंने रेड सर्कल बनाया है, दीज आर द वैल्यूज यू आर सपोज्ड टू टेक गाइस। यस और नो? जिन वैल्यूज के ऊपर, जिन नंबर्स के ऊपर रेड सर्कल बने हुए हैं, दीज आर द वैल्यूज यू आर सपोज्ड टू टेक। एम आई राइट? ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यूज आपको लेनी पड़ेंगी, राइट? ठीक है, क्योंकि इसमें 16 का डिक्रीमेंट आएगा और इन दोनों वैल्यूज में 17 का डिक्रीमेंट आएगा। एवरेज को मैक्सिमाइज रखने के लिए रिडक्शन कम से कम चाहिए आपको, राइट? सो नाउ यू सी दैट हियर गाइस, नाउ यू सी दिस हियर, इसमें टोटल 10 का डिक्रीमेंट, सो दैट मींस जेज जो कार है वो हाफ माइलेज देगी, हाफ देगी तो मारुति हुंडई से बिलोंग करेगी, और सिटी कार 3/4 का माइलेज देगी तो वो निशान और शेवरले से बिलोंग करेगी, राइट? नाउ लेट्स सी दैट जेज अ प्रोडक्ट ऑफ ईदर मारुति और हुंडई, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और रॉन्ग? We are supposed to find out the statement that would necessarily be true. Jazz is a product of either Maruti or Hyundai. Yes, that's a perfect right statement. This is correct statement. City is a product of either Maruti or Hyundai. नहीं, City जो है 3/4 का माइलेज दे रही है, 3/4 वाला माइलेज देने वाली कंपनी जो कार है वो निसान या शेवरले से बिलोंग करेगी। That's wrong statement. Swift gave lower average than what was guaranteed. नहीं, लोअर एवरेज को अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल रखना है तो स्विफ्ट और मारुति की गाड़ी की एवरेज मेरे को एज इट इज रखनी पड़ेगी। दैट्स आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। माइक्रा डिड नॉट गिव ए माइलेज लोअर देन व्हाट वाज गारंटीड। हाँ सॉरी, ये माइक्रा कार है, सो माइक्रा कार इज नॉट गिविंग एन एवरेज व्हिच इज लेस देन गारंटीड। दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? सो दैट मींस आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। इज इट क्लियर? बी वुड बी द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस और नो? डू यू एग्री? आया ना? राइट बच्चों? ठीक है ना गाइस, look at this question number 2. If the average mileage of all the 4 cars is 24 miles per liter, क्या आंसर है बच्चों? सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला आप लोगों ने? What's the answer you have got for the second number question? Question number 2, what is the answer of the second number question, guys? Come on, tell me. C. Okay. Average miles of all the 4 cars is 24 miles per liter. Okay. First of all, write down all the names. Zeds, City, right, Swift and Micra, right? और इनका एवरेज क्या था? 20, 24, 32 and 40, right? 20 kilometer per hour, 24 sorry per liter,
24 kilometer per liter, 32 kilometer per liter, and 40 kilometer per liter, right? And we have two cases, right? Car that belongs to either Maruti or Hyundai will be giving half of the average, and that car can be any of these four. तो उस केस में एवरेज आएगा 10, 12, 16 इस केस में और 20 इस केस में. Car that belongs to Nissan or the Chevrolet will be giving 3/4 the average. उस केस में एवरेज आएगा यहाँ पे इसका 15 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 24 और इसका 30. Right guys? Now, this is the total picture we have. Current average is 29 kilometer per liter, right? Now guys tell me, 29 kilometer per liter से मेरे को average 25 kilometer per liter बनाना है. What is the decrement I want? What is the decrement I want? Tell me guys, 29 kilometer से 25 kilometer per liter की average मेरे को find out करनी है. Can you guys please tell me what is the reduction in the average? What is the reduction in the average I'll be having? 29 किलोमीटर से 25 किलोमीटर, अच्छा 24, हाँ 24 किलोमीटर पे लेके आना है. सो 29 से 24 लाना है, तो एवरेज में जो डिक्रीमेंट करना है वो 5 का करना है. 5 का डिक्रीमेंट 4 वैल्यूज पे, दैट मींस टोटल डिक्रीमेंट 20 का होना चाहिए. यस और नो? आई वांट कि टोटल डिक्रीमेंट 20 का होना चाहिए. नाउ टेल मी गाइस, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो मेरे को डिक्रीमेंट राइट 20 का दे सकते हैं? यू सी दैट हियर, इस केस में डिक्रीमेंट 20 से 10 जाएगा तो डिक्रीमेंट 10 का होगा, 20 से एवरेज 15 पे जाएगी तो डिक्रीमेंट 5 का होगा, 24 से 12 पे जाएगा तो डिक्रीमेंट 12 का होगा, 24 से 18 पे जाएगा तो डिक्रीमेंट 6 का, 32 से 16 पे तो डिक्रीमेंट 16 का, 32 से 24 पे जाएगा तो डिक्रीमेंट वुड बी ऑफ 8, 40 से 20 का डिक्रीमेंट वुड बी ऑफ 20 एंड 40 से 30 का डिक्रीमेंट होगा जो होगा 40 से 30 जो जाएगा दैट वुड डिक्रीमेंट वुड बी ऑफ 30. यस और नो? टेल मी गाइस, ये जो रेड में जो नंबर्स हैं ये डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. व्हाट आई वांट इज कि टोटल डिक्रीमेंट 20 का होना चाहिए. किन दो नंबर्स का टोटल 20 आ रहा है बच्चों? कैन यू टेल मी अ नंबर? एक नंबर ऐसा न्यूमरेटर में से पिक करो और दूसरा नंबर डिनोमिनेटर से पिक करो जिनका टोटल एक नंबर इस रो में से पिक करना है, एक नंबर आपको इस रो में से पिक करना है. जो रेड वाले नंबर्स हैं वो, क्योंकि वो डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इनका टोटल जो आना चाहिए वो 20 के इक्विवेलेंट आना चाहिए. कैन यू प्लीज टेल मी दोस टू नंबर्स? कौन कौन से केसेस बनेंगे, कौन कौन से नंबर्स लेने पे? एक तो ये दिख रहा है मेरे को, ये 10 का डिक्रीमेंट एंड ये 10 का डिक्रीमेंट, टोटल मेरे को 20 का डिक्रीमेंट देगा, राइट? यहां पे इसको 10 से इसका हाफ ले लूं और इसका 3/4 ले लूं तो टोटल डिक्रीमेंट 20 का हो जाएगा. एवरेज 29 से 24 पे रिड्यूस हो जाएगी. क्या कोई दूसरा केस भी हो सकता है? कैन देयर बी एनी अदर केस जिसमें टोटल 20 का आ रहा है बच्चों? यस, एक और केस ये भी बन सकता है. इफ आई टेक दिस वन, राइट, इसका एवरेज हाफ करूं तो 12 का रिडक्शन आएगा, इसका एवरेज 3/4 करूं तो 8 का रिडक्शन आएगा. तो 12 का रिडक्शन यहाँ पे, 8 का रिडक्शन यहाँ पे, टोटल 20 का रिडक्शन. यस और नो? Right, so I will be having two cases in this. Right, now you see this. अभी या तो ब्लू वाला केस एप्लीकेबल होगा या फिर ग्रीन वाला केस, राइट? सो ब्लू एंड ग्रीन बोथ केसेस आर एप्लीकेबल. यस और नो? आप लोगों ने आंसर क्या दिया था मेरे को? व्हाट इज द आंसर यू हैव गिवन? किसी का नहीं है आंसर इस क्वेश्चन में. सो सिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर निसान और शेवरले. वो बोला कि सिटी जो गाड़ी है वो निसान की या शेवरले की है. नहीं, सिटी गाड़ी जो है, राइट, अगर ग्रीन वाला केस होगा तो सिटी गाड़ी मारुति और हुंडई से भी बिलोंग कर सकती है. कैन वी से दिस फॉर श्योर? कैन वी से दिस फॉर श्योर दैट सिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ निसान एंड शेवरले? नो, वी कैन नॉट से दिस स्टेटमेंट. व्हाट इफ आई टेक दीज टू केसेस? इन दैट केस सिटी विल बिलोंग्स टू मारुति और हुंडई एंड स्विफ्ट विल बिलोंग टू निसान और शेवरले. सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. Micra did not give the mileage lower than what was guaranteed. Micra की एवरेज गारंटीड एवरेज से नीचे नहीं है. नहीं, अगर दोनों ब्लू वाले केसेस आपने लिए, राइट, इफ आई एम टेकिंग दीज टू ब्लू केसेस तो माइक्रा का एवरेज गारंटीड एवरेज से कम आएगा. 20 का रिडक्शन करने के लिए, एवरेज को 24 माइल्स पर लीटर लाने के लिए, तो आई कैन ऑल्सो टेक माइक्रा एवरेज एज 30. आई कैन रिड्यूस इट बाय 3/4 and Jazz average can be reduced to half, that is 10. In that case also the average will be equal to 24 miles per liter. So Micra ने
गारंटीड एवरेज से नीचे का एवरेज नहीं दिया, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. कंफर्म नहीं बोल सकते, हो सकता है ब्लू वाला केस लिया. That means both statement are false. C would be the correct answer of the question, guys. Okay, is it done? Both statements are false. ठीक है बच्चों. Okay. What could be the minimum average? What could be the minimum average mileage of all the 4 cars after 1 month? What could be the minimum average mileage of all the 4 cars after 1 month? मिनिमम एवरेज कितना हो सकता है बच्चों? टेल मी व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या आंसर आएगा मिनिमम एवरेज? सी 22. ओके, सी गाइस, एवरेज को मिनिमाइज करना है, यहीं पे क्वेश्चन को कर देते हैं मिनिमाइज. अभी एवरेज 29 का है, एवरेज मिनिमाइज करना है तो सबसे ज्यादा रिडक्शन लाना है. सबसे ज्यादा रिडक्शन, टेल मी गाइस, ये रेड वाले नंबर्स रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैक्सिमम रिडक्शन, यू कैन सी दैट द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन पॉसिबल वुड बी 8 and 20, राइट. अगर इसका हाफ से रिडक्शन किया और इसको 3/4 पे लिया तो 20 का रिडक्शन यहां पे आएगा और 8 का रिडक्शन यहां पे आएगा, तो टोटल रिडक्शन होगा 28 का. यस और नो? 28 से ज्यादा का रिडक्शन पॉसिबल है? 10, 10, 20 नहीं, 12 और 8, 12 और 10, 16 और 10 नहीं, 20 और 8. मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इज 28, राइट. मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इज 28. 28 का मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन हो सकता है. 28 का रिडक्शन 4 वैल्यूज में जाएगा तो मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इन एवरेज इज ऑफ 7. तो एवरेज नॉर्मल 29 थी, 7 का डिक्रीमेंट लगेगा तो राइट मिनिमम एवरेज. ये मैक्सिमम रिडक्शन डालोगे तो मिनिमम एवरेज आएगा. तो मिनिमम एवरेज ऑफ ऑल द 4 कार्स कैन बी इक्वल टू 22 किलोमीटर पर लीटर. यस और नो? आंसर वुड बी सी ऑप्शन, गाइस. डन? इज दिस क्लियर? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन दिस? डू लेट मी नो बच्चों. ठीक है. Okay, done. Now guys, now here's the next question that we have. Average miles of all the 4 cars is 24 miles per liter. Then what is the difference between the mileage of Swift and that of City? क्या इसका क्या आंसर आएगा बच्चों? Average miles of all the 4 cars is 24 miles. What is the answer of the question? Guys, come on, tell me. क्या आंसर निकाला आप लोगों ने इसका? ओके, देखो 28 से 29 से एवरेज 24 जा रहा है, मतलब 5 का रिडक्शन. टोटल कितना रिडक्शन चाहिए? 5 का रिडक्शन चाहिए. 4 वैल्यूज में 5 का रिडक्शन, तो 20 का टोटल रिडक्शन चाहिए. 20 का रिडक्शन चाहिए तो वी कैन सी दैट कि 20 का रिडक्शन में या तो ये ब्लू वाला केस या फिर ये ग्रीन वाला केस, राइट. हमें क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइलेज ऑफ स्विफ्ट एंड सिटी. स्विफ्ट और सिटी की माइलेज में डिफरेंस बताना है. सी गाइस, अगर तो ब्लू वाला केस लेते हो तो स्विफ्ट एंड सिटी की माइलेज में डिफरेंस कितने का आएगा? if I take the case of हाँ देखो बच्चों, if I take the case of अगर 20 का रिडक्शन करने के लिए अगर मैंने ये दोनों नंबर्स का रिडक्शन किया, राइट, जैज और मारुति का रिडक्शन किया, तो सिटी और स्विफ्ट के बीच में जो रिडक्शन आएगा वो 8 का आएगा. अगर मैंने ग्रीन वाला केस लिया तो सिटी की एवरेज 12 हो जाएगी और स्विफ्ट की एवरेज 24 हो जाएगी. यस और नो? तो इन दैट केस जो रिडक्शन आएगा वो 12 का आएगा. यस और नो? 20 का रिडक्शन तो इसमें भी पॉसिबल है ना, ग्रीन वाले केस में. तो 12, इसकी माइलेज 12, इसकी माइलेज 24, तो डिफरेंस आया 12 का. और अगर ब्लू वाला केस लिया तो उस केस में इनकी माइलेज में डिफरेंस आया 8 का. सो गाइस, क्वेश्चन सेज देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइलेज? 8 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है. तो क्वेश्चन में बेसिकली ऐसे लिखा होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डिफरेंस इन द माइलेज ऑफ स्विफ्ट एंड द सिटी? द आंसर विल बी 12. थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ है बच्चों. यस और नो? इज इट क्लियर? Which of the following can be the average of city and can be the difference with the city and the mileage? Answer would be 12, guys. Difference 8 भी हो सकता है. Yes or no? Difference 8 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है. Got it? This is clear, guys. Average based set था. It is must for all of you to do this set because CAT
में ऐसा सिमिलर सेट स्टॉक बेस्ड आ चुका है, वो सेट में थ्योरी में बच्चों को करवा चुका हूँ। दिस जस्ट फॉर योर रिवीजन की एक एडिशनल सेट आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं। तो जिन बच्चों ने इस सेट को सॉल्व कर लिया, जिन बच्चों ने वो सेट किया हुआ है स्टॉक वाला कैट 2006 का, और उसके बाद ये सेट सॉल्व नहीं हुआ, दैट मीन्स आपकी लर्निंग्स नहीं हो रही है अच्छे से, राइट। सो यू शुड डेफिनेटली इम्प्रूव, राइट, एंड यू शुड चेंज द मेथड ऑफ स्टडी, राइट। ये सेट सबसे होना चाहिए था बच्चों, राइट। सारे क्वेश्चंस इसके सही होने चाहिए थे। गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। दिस इज द okay guys, subscribe to the channel Easy Grid by Sameer to get max to cover 100% Quant and DILR syllabus. We will be starting with reasoning ability for OMETS very soon on this channel, guys, right? And this is the number at which you can book your slot for CAT and OMETS mentorship. Thank you so much for joining the session, guys, right? आप लोगों का रिस्पॉन्स इस सीरीज में बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, राइट, एंड आई गेस वी शुड टेक अ ब्रेक, नहीं? चलो, see you guys then, take care, thank you so much for joining the session, guys. And in fact what I'm gonna do is now is हाँ, जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आई नीड इज जो बच्चे सेशंस को रेगुलर लगा रहे हैं, जो बच्चे सेशंस में नहीं है, राइट, आई एम गोना मेक अ सेपरेट अ मेंटरशिप ग्रुप नाउ, ओके, ठीक है। जो नॉर्मल डेली DLR लाइव क्वांट में जो बच्चे हैं जो रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको रिकॉर्डिंग सीखनी है, रिकॉर्डिंग सीखो, लाइव देखना है, लाइव देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। बट जिन बच्चों को लाइव आना है मेरे सेशंस के अंदर, राइट, आई वॉन्ट 30 नेम्स, ओके, आई जस्ट वॉन्ट 30 नेम्स, जिसका मैं 1-to-1, राइट, काउंसलिंग करूंगा, मेंटरशिप करूंगा वीकली बेसिस पे, राइट। और वो 30 बच्चे चाहिए जो रेगुलर सेशंस में आने के लिए रेडी है, राइट। बट आई वॉन्ट द स्ट्रिक्ट 30 नेम, जिसमें कोई भी एक सेशन भी, सिंगल सेशन भी मिस नहीं कर सको, तभी अपना नेम देना, अदरवाइज नहीं। बिकॉज इन सब बच्चों का रेगुलर काउंसलिंग मेंटरशिप इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक रेगुलर सेशंस, रेगुलर मेंटरशिप सेशन, 1-to-1 सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, असेसिंग योर प्रोफाइल, राइट, कहाँ आपका प्रिपरेशन सही जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स आपने किए हैं, किस टॉपिक पे कितनी असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस किए हैं, उसके ऊपर बेस्ड जजमेंट, कितने सेक्शनल टेस्ट दिए हैं, सेक्शनल टेस्ट नहीं दिए तो आई विल बी गिविंग यू द टारगेट कि आपको ये वीक के अंदर ये सेक्शनल टेस्ट देना है। आई विल असेस योर परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू कि व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक यू शुड बी पिकिंग नाउ, और इस टॉपिक पे कंसिस्टेंटली कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस शीट्स, एवरीथिंग will now be given to the students who are coming regular. And I would be needing 30 names. You guys can drop me a direct message and I'll be making a separate group for these students, right? ठीक है, right? अगर वो 30 होगा तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। चलो, see you guys then. As of now, take care, thanks a lot, see you, bye bye, take care.